Welcome everybody, myself Gaurav Sharma, an MBBS student from JR Medical College Gwalior, and today we are going to discuss a small but yet an important topic, that is lung volume and capacities. So let us finish this within 5 minutes. Okay, so basically we have lung volume capacities and lung volumes. Okay, so what is the difference between two? I will summarize that lung capacities are composed of two or more lung volumes. Okay, so now let us describe the phenomena which is occurring and let us name some of the volumes and capacities. Now, so suppose I am standing in the normal physiological condition and I want to now inspire. So what I will do? I will take in air inside like normal inspiration. So how I can show it here is that, which one I should take? Black. Normal inspiration. See this graph. I am inhaling and increasing the volume. So I am inhaling. And then I would exhale normally. Okay. So this normal condition and this normal amount of air which we inhale or exhale is termed as tidal volume, and it accounts for approximately 500 ml. Okay, so once again I normally inspire and normally expire. Now what I want to do is, suppose I am exercising, so I want maximum amount of air to get into my body. So what I will do, suppose I take normal air, but now as my body is demanding much oxygen, I would like to inhale as much as the air which I can inhale by forceful inspiration, and this reserve volume which can be inspired by forceful inspiration is known as inspiratory reserve volume. So this extra forcefully amount of air that I inspired is known as the inspiratory reserve volume, IRV, and it's composed of 2500 से 3000 ml. Okay, but now I want to exhale. So now if I exhale normally, then what I will do, I will exhale it and come to this level and come to this normal level, and again I would like to do tidal breathing. Okay, but now if I want more air to be expired out, I would what do? I would forcefully expire the air. So now normal IRV, normal expression. But now I want to forcefully and deliberately wanted to get rid of the CO2 within my body. So I would excessively expire, and this is known as forceful expiration. So now forceful expiration. So this one accounts for our forceful expiration, and this reserve amount of air, this reserve volume of air which we can expire out from our body using the force is known as expiratory reserve volume. That means it is normally present in our body and it is in reserve. Means when we would like to deliberately expire it out, it will be expired. Okay, so this accounts for 1100 ml approximately. Okay, and after forcefully expiring, we now again goes to the normal tidal breathing. So this is our whole course of what? Breathing. Now we have discussed about tidal volume, we have discussed about inspiratory reserve volume, we have discussed about expiratory reserve volume. Now let us discuss about the capacities. Capacities means a combination of two or more volumes. So first let us discuss inspiratory capacity, that is known as IC. So inspiratory capacity means tidal volume plus IRV. This will be IC. Next, vital capacity. Vital capacity is defined as the maximum amount of air which can be expelled out. Maximum amount of air that can be expelled out. That can be expelled out after forceful breathing. After forceful breathing. This is forceful inspiration
and this is the maximum amount of air which we can exhale after forceful breathing. So this much will account for our vital capacity. So vital capacity will involve IRV plus ERV plus tidal volume. Okay, so this is the vital capacity. Third one is total lung capacity. Total lung capacity will include the residual volume. I will come what is residual volume. So residual volume account generally for 1200 ml. ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी में इनके अलावा आरबी को भी ऐड कर देंगे। चौथी आती है एक्सपिरेटरी रिजर्व फंक्शन, या फिर इसको हम लिखते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब जो भी फंक्शन कर रही है, जो कुछ काम में आ रही है, और वो रेसिडुअल कैपेसिटी है मतलब हमारे लंग के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट है, तो उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा और ईआरवी आ जाएगा। क्योंकि ईआरवी हमारी फंक्शनली रेसिडुअल वॉल्यूम की तरह काम करती है। कैसे करती है? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये हमारे लंग के अंदर ही प्रेजेंट रहती है और एक्सपायर नहीं होती। तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम विल इंक्लूड ईआरवी एंड आरवी। अब ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो हमारे लंग के अंदर फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी प्रेजेंट रहती है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये लंग का कोलैप्स होने से बचाती है, जिसकी वजह से हमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने में मदद मिलती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब रेसिडुअल वॉल्यूम की एक दिक्कत है कि इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको माप नहीं सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। किससे? स्पायरोमीटर से। स्पायरोमेट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो स्पायरोमीटर इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता रिजर्व वॉल्यूम को। तो इस वजह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग एन स्पायरोमीटर। सो जिन जिन में भी रेसिडुअल वॉल्यूम आएगी उनको हम डायरेक्टली स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो किन किन में आती है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में और टोटल लंग कैपेसिटी में। तो इन दोनों में हम स्पायरोमेट्री यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दिस बोथ इंक्लूड रेसिडुअल वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम इज नॉट मेजरेबल बाय एन स्पायरोमीटर। सो दिस मच इज द कॉन्सेप्ट। आई होप आई हैव मेड द कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करिए, मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूंगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।